हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द Pavilion. मैं हूं फ़खर आलम. आप देख रहे हैं A Sports and the ARY Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. Now it's one more day to go. We get to the grand finals in Australia where Pakistan clash with England. And it's going to be a great day of cricket if it doesn't rain, of course. इसके बारे में हम बात करेंगे आपसे कुछ देर बाद दोस्तों. With me in the Pavilion, I have the four legends, the four icons of the game who served the game of cricket and our great nation. I have the pleasure of sharing this studio with them, this pavilion with them throughout this World Cup, and it's been just a fantabulous journey. I've got the young and dynamic Shoaib Malik. Shoaib, hello and welcome. Hello, Assalamu alaikum everyone. I've got Mr. Reliable, Mr. Dependable, Ms. Paul Haq. Assalamu alaikum, Ms. Paul. Assalamu alaikum. I've got the toe-crushing, the batsman terrorizing, the Mr. Wonderful, Waqar Younis. Waqar, hello, assalamu alaikum and welcome. Hello. Assalamu alaikum. And I've got His Highness, the Sultan himself, Mr. Wasim Akram. Hello, Wasim. Hello, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक All good. How was the day off? छुट्टियाँ कैसी थी? How was the day off? How was the day off? We all think alike now. मेरा day off नहीं था. आपका तो day off नहीं था. You were still filming for another TV commercial. Yes. One of the 2,000 billion commercials that you do. Yeah. And the $100 billion Part of the job. year. I wish somebody send me my one of my chachas, Huma's chachas, my late wife's chacha, Arif uncle. उन्होंने मुझे भिजवाया एक forward किया article किसी newspaper का कि how much I worth. How much you made? How much I'm worth right now. This is $23 million. तो मैं कहते मैं फिर मैंने फिर अंकल आरिफ को लिखा है या मैं पागल आना रोज साइड पे आना 3 घंटे ड्राइव करके. वो नहीं होता वो जो वो हम बात करते हैं रिक्शे में बैठते हैं खिच Yeah, cling. Yeah. All right. Okay, that's good. Misbah, how was your day off? डे ऑफ था. कल था. Yesterday था ना. Yesterday था Misbah. अच्छा, यहाँ से डे ऑफ था. What you do? ट्रेनिंग. ट्रेनिंग कर रहे थे. पूरा दिन. ट्रेडमिल ऑन करके उसको देखते रहे किस तरह. ट्रेनिंग तुन के फिर रोटी भी राज के. Lovely. And for you, Shoaib, how was your day off? My day was okay. I think we were together. No, we weren't. I deny. Trust me, we were together. I deny. Absolutely. There is a story in there. There is always a story somewhere. There is a story in there somewhere. I can reveal the story. No, go please, on. I'm going to hit you so hard. And Waqar, for you, what were you up to? Yeah, quite. I like the haircut, the new hairdo. Like it's like Yeah, beautiful. Actually, look, you're quite young. Yes, young and handsome, like always. He is young. He is young. उसने मुझे दिखाया नहीं पहले लेकिन लग रहा है ठीक है. Yeah. अच्छे लग रहे हैं आप. कैमरा कटवाया तो था. नहीं काटा. मैं तो कल से I'm off Twitter now. मैंने Twitter से मैंने. हाँ, आपकी बड़ी तारीफें हो रही थी ट्विटर पे 2 दिन. मेरी भी और हमारे ओनर सलमान इकबाल की भी. हाँ, बहुत ज़्यादा. और हर कोई ऐसे बातें कर रहा था जैसे उनको हमसे ज़्यादा पता है. हम बिल्कुल बेवकूफ़ हैं. ना हमने दुनिया देखी है, ना हमें क्रिकेट का पता है. हम बस यमलिए मार रहे हैं. Everybody else is right. But you. बस 21 साल खेली और 20 साल उस पर बोला है. That's it. Half a century Yeah. later. No, well, anyways, we'll talk about that. That's an interesting If you want to, sure, go nuts. situation about that. But before we get on to the business of the PSL, I think we have the business of the ICC Men's T20 World Cup final. Big day. And big day. Firstly, congratulations to all the Pakistani fans and the English fans around the world. And congratulations to both the teams for getting into the final. हमारे लिए बहुत बड़ा, of course, एक बड़ी चीज़ हुई है क्योंकि 13 साल बाद हम वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने लगे किसी भी वर्ल्ड कप का, वो 50 ओवर्स हो या ये T20 हो. और दूसरी चीज़ ये है कि 30 साल बाद उसी मैदान में एक दफ़ा फिर जो 92 की ग्लोरी आज तक हमें याद है, उसी मैदान में उसी तरीके से एक दफ़ा फिर टाकरा होने लगा है हमारा इंग्लैंड के साथ. Wasim, tremendous amount of nostalgia and memories and similarities between 92 and now. Let's go down that memory lane with you for a minute. Take me down to the 1992 World Cup final a day before. आज के दिन एक दिन पहले फाइनल से what was going on? अब you know I was trying to remember. मुझे पता था ये क्वेश्चन आएगा और बिल्कुल because situation ऐसी है, माहौल ऐसा है, like you said कि nostalgia है. Pakistan England playing together after 92 and that too in the finals. I literally had no idea what we did day before. I think if I remember vaguely, we had a light practice session.
और जो आई थिंक लड़के अब पता नहीं कहाँ ठहरे हैं, मेलबर्न में मे बी साउथ एंड में ठहरे हैं, वो जो स्ट्रीट यारा रिवर पे है. वी स्टेड अक्रॉस द MCG, दैट होटल. यू जस्ट वॉक इनटू द प्रैक्टिस सेशन, वॉक इनटू द ग्राउंड, about 10 minutes walk. So I think we did a light practice session, bit of fielding, and just came back. I remember it was nothing special we did out of ordinary, just did the normal stuff. But what was the chit chat going on? Like आपकी मोइन खान I think हम सब एक group आपस में एक दूसरे में क्या गप्पे लगे थे? मैं, इंजी, मोइन, मुश्ताक, आकिब, इजाज. Who else was our age group? Zahid Fazal, I think, was there in the squad. Wasim Haider was there. We just, I think, 3-4 of us went out for lunch, just an easy lunch after practice, and just stayed in our rooms. We were just too excited. We were just too excited. We were waiting कि कल जल्दी से आए, मैच खेलें. वो excitement एक दिन पहले जो लड़कों को आज वहाँ हो रही होगी सारा दिन. Little bit of light practice, have a good laugh, just relax. Don't think. ज़्यादा सोचना नहीं है कि कल final है क्या होगा. Don't even think कि कल क्या होगा as a player. Just you guys done the hard miles. Tomorrow is a day to shine. And I think मैंने आज Instagram पे लिखा भी था मैसेज कि guys, Pakistan team, you should be proud of yourselves. Whatever happens tomorrow, give your 100%, go out and have fun, because it's a moment to enjoy yourself. That's what you play for, the World Cup finals. So I think the whole nation is behind them either way. As long as they play well, fight well till the last ball, and in the end, the best team will win. Absolutely. The privilege I have here is that all four sitting on this table have all seen and tasted a final, a World Cup final. And I think I'll take this story from you from the '92 World Cup. I do remember that you said on the day of the final you were feeling very light. You were feeling very, thoda sa wo ek confidence. I mean, it was that story. I wrote it in my book that my England team के जो player थे नील फेब्रदर, मेरे दोस्त, county mate, 3 साल इकट्ठे खेले. So I started throwing balls at him. I said, he came out to knock. कोई लड़का नहीं था मिल रहा. मैंने कहा मैं फेंक देता हूँ. He said, are you sure? I said, yeah, I'm sure. So I was. और आज आप फेंक के देखें हम. आज तो ये तुम्हें सोशल मीडिया वाले नहीं छोड़ेंगे. So nobody noticed. आज दूसरी टीम को खिला रहे थे प्रैक्टिस. Dozen balls उसको मैंने फेंक के नॉकिंग कराई, उसने मुझे नॉकिंग कराई. Those were good days. Yeah. That's a good memory to know. Yeah. So just before the final, you're throwing ball and Neil Fairbrother. That's amazing. That's. I was just checking कि कहाँ ball करना है, so by throwing the ball at him. Yeah. Smart. फुल टॉसेस फेंके होंगे. हाँ वही आगे नॉकिंग करानी थी, तो गोडा तो नहीं थी ना तोड़ देना. That would have been bit too much. A little too much. They're just pushing it too much. Waqar, share your World Cup memories with us. I know you have. I have not been part of the finals. Yeah. I've been part of a lot of World Cups. But then again, I always cherish and own that I was also part of the 1992 World Cup, because I came back from the tour. इंजरी के साथ, तो रिमेंबर जब ये लोग जीत के आए हैं और वहाँ पे जो हंगामा और जो जोश था, जो वलवला था, मैंने ऐसा लाइफ में नहीं देखा. वो ट्रक पे आपको ही चढ़ाया था ना वसीम भाई ने. वो जो प्रोमो में भी आपने लाइन बोली थी, तुसी मैंने ट्रक पे चढ़ा देता. Yes. That is very right actually, because I still remember जब ये लोग आए थे, I was invited to go and receive them. क्योंकि it was a big hiccup for me at the time, क्योंकि expected नहीं था, और suddenly एक चीज़ होगी, on the tour हुई, and I had to come back, and इतनी कोई ज़्यादा expectation नहीं थी उस टीम से, and then the team sort of went all the way and won that World Cup. उसके बाद जब मैं वहाँ गया, and I still remember those days जब things were a lot easier then. तो उन्होंने एयरपोर्ट के जो गेट होते हैं ना, गेट एक तो होता है आप वाया सिक्योरिटी, करेक्ट, वो गेट खोल दिए हुए थे जहाँ से नॉर्मली ट्रक्स वगैरह जाते हैं ना, तो दे ओपन, सो पीपल वर इनसाइड ऑन द रनवे रैंप. यस, तो सारे अंदर थे, एंड वी वर जस्ट स्टैंडिंग अंडरनीथ द स्टेयर्स. उस टाइम टनल्स का सिस्टम नहीं होता था, तो मैं खड़ा था, and then the prime minister of the time, and then some other dignitaries, they were all standing there, and I was, we were all very excited, happy, and still remember कि एक स्पॉटलाइट लगाई हुई थी जहाज़ के जिस दरवाजे से फ्रंट गेट से इन्होंने निकलना था, उन्होंने जो बिग स्पॉटलाइट वाज ऑन दैट, एंड हम लोग नीचे लिटरली लुकिंग एट देम. And I remember Wasim bhai was the first one, came out with that crystal trophy. Yes, I remember that. He came out with that crystal trophy. By that time, I was fine. Till that time, I was okay.
And literally when I saw them coming out, I broke down. I had to literally sit down because मुझे ऐसा लगा कि मेरी टांगों में से जान निकल गई है. It was that kind of moment for me. And then thanks to them, जब ये नीचे आए तो I was literally सिसकियों के साथ रो रहा था. I missed out on that big occasion, but the way the love they gave me, और जिस तरीके से फिर मुझे उस तरह साथ और respect दी और ट्रक पे जो मैंने उसमें बताया ना ट्रक पे चढ़ाया गया. तस्वीरें मुझे किसी ने भेजी हैं. I have them. Yeah, I was. You should put them in the group. We can share them on the screen. They're very small, but I can pass it on. Pass to it you on. guys. Let's see. Maybe we can show them on the screen. That's amazing. So what a story, man. Yeah. And one last second. वहाँ से जब ट्रक निकला है तो I remember वो जब आप पुराने एयरपोर्ट से जब निकलते हैं उस ज़माने में सीधी लेन होती थी. जी बिल्कुल. अब तो वो बहुत सारी नई चीज़ें बन गई हैं. सीधी लेन होती थी. And I'm not exaggerating. आपकी जहाँ तक नज़र जाती थी, जहाँ तक नज़र जाती, उससे आगे तो नहीं नज़र जाती थी, वहाँ तक लोग ही लोग थे. And they were like भंगड़े हो रहे हैं, टोल बज रहे हैं. There were horses, there were camels. Yeah. There was just. It was just something which I have never, ever experienced before or after. Yeah, that's amazing, man. And I remember कि मैं halfway घर जाने की इतनी जल्दी थी. जाना हमने PC था. But the roads were packed from old airport, Lahore airport to the PC. Yeah. 15 minutes drive. Yeah. It took us 3 hours to reach the Yeah. वो कौन सा bridge It है? wasn't moving. वो Fortress Stadium वाला. Yes. Fortress Stadium. 3 hours to get to the fortress. Yeah. Unbelievable. और उसके Truck बाद wasn't moving. मैं ट्रक से छलांग मारी है. मेरा भाई गाड़ी में पीछे की दूर खड़ा था, इशारे करी जा रहा था. मैं क्या मैं हुने आना. मैंने ट्रक से छलांग मारे, गाड़ी में बैठ के घर चला गया हूँ मैं. दादा साहब तक जाना था. हाँ, I know. मैं दादा साहब फिर बाद में गया था because I went home to see my mom and dad. That's amazing. Yeah. Man. What great memories here. Here's another thing. I have the other two gentlemen who were there in 2007 when Pakistan lost the final, but were there when Pakistan won the World Cup in 2009. We'll talk to them about their memories. But after this break, keep walking. After this break, keep watching the Pavilion on A Sports, 10 Sports. Well, not today, 10 Sports, A Sports. I've got everything bungled up today. वो बाद में करेंगे. All right, welcome back to the Pavilion. मैं Akram. आप देख रहे हैं A Sports and the Airwise app. And no, you don't need to keep walking. Just keep watching. That's what you need to do. Sorry, that was me getting off track there earlier before going into the break. With me in the Pavilion, I've got Shoaib Malik, Ms. Paul Haq, Waqar, Younis, and the great Wasim Akram. And we were talking about some memories. And right now we've got a special guest with us online. We've been bringing in. He's been one of the very successful international coaches. Has a glorious career playing. Has more than 11,580 international runs. And we are very lucky. He used to coach England, one of the very successful coaches for England, and now coaches around the world with different leagues. I have the pleasure of introducing him here. We've got Andy Flower with us. Hello, Andy, and welcome to the Pavilion. Hi, Alam. Hi, everyone. Really nice to be with you. Thanks for the welcome and thanks for those kind words, Alam. Well, you know what? It's not enough. There's a lot more to be said about what you've done for the game of cricket. So thank you very much. But hey, Andy, I've got Wasim, Wasim Akram, Waqar, Younis, Ms. Paul Haq, and Shoaib Malik. And I thought we're going to have a little word with you. Since you coached the English cricket team, we wanted to kind of, reach out to you and try to extract as many secrets as possible before we play the final tomorrow. So please tell us, how do we get rid of Jos Buttler and Alex Hales right up front? Wow, what a question that is. Yeah, they've certainly, they've turned around that early competition average form that they were in. And now they look just in outstanding form, super confident, in really good rhythm, and particularly dangerous. It's going to be a wonderful matchup, those two against the Pakistani Quicks, especially on a fresh Melbourne pitch. So that's a mouth-watering prospect. Yes, it is indeed. Wasim wants to. Hey, Andy, it's Wasim here. How are you, buddy? Long time. Yeah, great to see you, Was. Same, likewise, buddy. A quick question, Andy. In this modern era of coaching style, how important are matchups in this format, especially? Well, I think in all cricket, since inception,
matchups have been important. It's just back in our day, we didn't call them matchups. And, we just had normal cricketing intelligence where if someone was weak against left arm spin, you'd put the left arm spinner on. But I think why it's become more of a talking point now, the tactics of matching up a particular bowler or batsman against the opposition, is because of the increased use of data and the increased availability of video analysis that we can tap into. And so it's been labeled as matchups now, but it's just using the information and data that we can tap into to cause bigger problems for the opposition. So it is really important. Even if you're playing with a few percentage points of chance this way or that way, if you actually can bring together both your instinctive cricket knowledge that you built up over 20 years of playing the game and studying the game, to some of the information from the analysis department, then it would be silly not to take advantage of those few percentage points. So I think it's really important. But it's also really important that the captain feels empowered to make decisions out there. As you know, you're making hundreds or thousands of decisions continually through a cricket match. And it's vital that he doesn't feel as if he's being overlooked by the analysts and coaches, and that he feels empowered to make those decisions. All right, Waqar has something to ask you. Waqar? Hi, Andy. Waqar here. Good afternoon. How are you? Yeah, I'm good, thanks. Good. Nice to see you. Good to see you again. My question is just, it's actually two questions but mixed together. This World Cup, overall, what do you think of this World Cup? And what about the pitches, especially the Melbourne pitch? You know, you've seen many a times, matches being played in Australia. You've played a lot of cricket in Australia. So what do you think of the overall view of the World Cup and especially the Melbourne pitch? Yeah, so overall, looking at this World Cup in Australia, it's been really interesting to see the sort of spring, early summer conditions in Australia, which usually international sides aren't playing much cricket around this time in Australia. So we've definitely seen the white ball swing again. So I think when you guys were in your pomp, the white ball did used to swing, and then we went through quite an extended period where it didn't swing in white ball cricket, and batsmen dominated white ball cricket in any format. And now the white ball is starting to swing again, and certainly in these spring conditions in Australia, that's been the case. So opening up front in that power play, it's been fairly tricky battling. And I would imagine on a fresh and new Melbourne pitch prepared for the final, that again there will be wicket-taking opportunities with that new ball. So I think those conditions have been really interesting. I think also we've seen, for instance, Pakistan shift their attack from their early balance to adding Mohammad Wasim to it and having 4 quick and 2 spinners to fall on. And that looks like a very, very well balanced bowling attack now. Thank you. So, yeah, I think that's. I think it's been fascinating seeing the bowlers come back into the game in this tournament, and it's really. I think it's really good for the game when bowlers are encouraged to attack like they have been in this tournament. It makes it better for the audience, both the spectators in the stadium that see the ball whistling past the outside edge or thumping into a chest or a shoulder, and then also for the audience watching it on TV when we get so much detail and brilliant analysis as well by guys that know what they're talking about. So it's made for really exciting cricket. All right. Shoaib Malik has something here he wants to ask you, Andy. Go ahead, Shoaib. Hi, Andy. How are you? Hi, Shoaib. Yeah, good. Thank you, mate.
So it's a very simple question. What's your prediction for the finals? It might be a simple question, but it's not a simple answer. I do think that, straight up, I think England are looking particularly confident and dangerous. You know, they do have all their bases covered. They've got 4 quick bowlers they can call on. They've got 3 spinning options they can call on, depending on the pair of batsmen that are in the middle at the time. And they just look as if they're starting to hit their straps, and as a team really find their rhythm and, crucially, their confidence. So I would put them slightly ahead of Pakistan at the moment. I know you and your audience don't want to hear me say that, but I reckon that's the case. Just a few percentage points ahead of where Pakistan are. Pakistan, however, they've had a sort of checkered run into the final, and I think, from what I can pick up, there's almost a sense of destiny to their part. So if they are carrying that feeling and that self-belief into the game, that's not a bad place for them to be. So I mean, if I was a betting man, I would put a little bit of money on England at the moment. Whoa! But it's not a big difference, as we know. Yeah, it's a fair call, Andy. It's Wasim here again. It's a fair call. Even I think it's 60-40 to England. 60% England are favourites, 40% like Pakistan. Hey, so Andy, quick question: with the new pitch, weather around, you think toss will be crucial? And if any team wins, what should they do? Like a World Cup final? Well, it's a valid question, but I'm going to duck it a little, if I may, because I was always of the opinion that, yes, look at your stats, look at results on the ground, on fresh pitches in T20 cricket in Melbourne, but actually seeing the pitch, having a look at the pitch, getting a feel of it, even, you know, laying the palms of your hands on the pitch, feeling the level of moisture, and also talking to your senior players and finding out the feel in your group. What do you guys fancy doing on that day in that situation? I think those are quite important factors in the decision-making process about what to do at the top. So if I was either team, I'd be taking that sort of approach to it, listening a little bit to the numbers and the data, but then also taking views of senior players and getting a feel for it yourself. Often you rock up, walk out to the pitch, look overhead, have a feel of the weather, lay your hands on the pitch, and straight away you get that feeling, this is what we should do. So I'm going to sort of leave that answer pretty open, if that's okay. All right, Andy. Thank you so much for your time, Andy. One last quick question for you, and that is, who do you think are the impact players from both the teams for tomorrow's big game? Well, it's a fascinating lineup. You know, the slightly more conservative Pakistani batting against the English bowling lineup. And if Mark Wood is fit enough to play, that'll make it super exciting. He's been the fastest bowler on show. He's been above 150 often, and he'll bring a different element of attacking fast bowling to the England lineup. But I think obviously the 2 opening batsmen are important for Pakistan. There's been lots of talk about whether Mohammad Haris should go up and open, but we know Rizwan and Babar are going to walk out there together. If they score runs and get runs on the board for Pakistan, and they masters at chasing down totals, those 2 guys are absolutely key. They might not look like the most exciting, you know, T20 batsmen in the world, but they're absolutely key. One of them providing the platform to build big innings for the team from. So they key. I think it's been great seeing the middle order
of Pakistan come into it with Iftikhar and Shadab Khan, and Mohammad Harris playing some really good aggressive cricket with the bat. Pakistan really needed that. And then Butler and Hales are keys up front, of course. Yep. Butler particularly, he knows how to win games. He wins many games on his own. He's the captain. He should be an absolute target for those Pakistani fast bowlers up front. All right, Andy, thank you very much for your time. Really appreciate it. From all of us here in the Pavilion, we look forward to having you more often in the Pavilion. Maybe have you here. Nice to chat to you. Thank you very much, guys. Thank you. You have a wonderful day. Thanks a lot. Thank you. And there you have it, folks. Andy Flower there. Bड़ी interesting बातें हुई. सारे वो हुआ. Misbah, your takeaway from that line of questioning and answers from Andy? I think overall sensible जो input, looking at the conditions और knowing the squads, both team को उनकी strengths और पाकिस्तान टीम की overall strength, overall जो conditions हैं उस सारी चीज़ों को देखते हुए as a coach in depth जो आप analysis करते हैं, जो वसीम भाई भी बात कर रहे थे कि 60-40 अगर आप देखें resources देखें, conditions देखें, इंग्लैंड की recent form देखें, सारा कुछ पाकिस्तान की टीम को देखते हुए तो slight edge आपको लगता है और वो स्टार्ट में होता है किसी भी टीम को इन चीज़ों की वजह से बट डजंट मैटर राइट एक्चुअली व्हेन यू आर इन द मिडल एक और चीज़ इसकी जो एंडी की बातों से पता लगी ही डज बिलीव लॉट इन डेटा एंड मैचअप्स दैट्स व्हाट ही सेड एंड दैट्स व्हाई ही ब्रॉट इनटू इंग्लैंड साइड एंड देन इनटू मुल्तान सुल्तान बिल्कुल वो बिल्कुल सही बात उसने की है कि अगर आपको 5 to 10% भी उसका एडवांटेज होता है then it's silly not to take that advantage. So आपको अगर कोई भी चीज़ it's matter of वो inches centimeters जब आप इतना बड़ा competition में जा रहे हैं मैच में जा रहे हैं और अगर आप थोड़ा सा भी एडवांटेज ले सकते हैं why not जो आपको मैच से पहले अगर इस चीज़ का पता है but then again it's a final any cricket game on the field you won it on the field off the field doesn't matter data सब कुछ on the field on the day you never know who is going to produce what so that is basically the key. Well, that is the key, and with that, we're going to take a break right here in the Pavilion. आप देख रहे हैं A Sports and the ARY's app, our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. When we come back, there's more on the other side. Don't go away. Keep watching. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं Akram. आप देख रहे हैं Sports and the ARY's app, our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. With me, Shoaib Malik, Misbah Haq, Waqar, Younis and Wasim Akram. हम लोग कुछ वर्ल्ड कप की यादों के बारे में बात कर रहे थे और पिछली ब्रेक पे जाने से पहले आपको मैंने बताया था कि I've got two other gentlemen here जिन्होंने 2007 में वर्ल्ड कप के फाइनल में हार्ट ब्रेक एक्सपीरियंस किया और फिर 2009 में they were both part of the team when we lifted the T20 World Cup. Misbah and Shoaib. So who wants to start off? Misbah, Shoaib. Let's start from that heartbreak which everybody talks about, and then from there 2007 journey. आप कप्तान थे उस वक्त 2007 में, and then going all the way to 2009. I think 2007 को अगर मैं देखूँ तो मेरे ख्याल में first time था T20, but it wasn't the first time for Pakistan. मुझे लगता है कि हम लोग तो सालों से ही खेल रहे थे T20 cricket. We were used to प्लेइंग रमज़ान क्रिकेट और बहुत एक्सपीरियंस भी था कराची में था लाहौर में भी आपको पता है कि वहाँ पे हर जगह पे सीमेंट पे बहुत ज़्यादा होते थे 2020 और कुछ हमारा टेप बॉल का भी बैकग्राउंड जितने भी प्लेयर्स थे उनका था T20 क्रिकेट हमें सूट भी करती थी तो आई थिंक वी वर द फेवरेट्स एट दैट टाइम जो मैं टीम भी अगर हम देखें कि वो टेम्पलेट जो हम कुछ दिन पहले डिस्कस कर रहे थे जो टीमों ने अब आगे सोचा है कि आपके पास ऊपर से ऐसे अटैक करने वाले प्लेयर और फिर बीच में स्पिन को अच्छे खेलने वाले रोटेशन रनिंग बिटवीन द विकेट एंड देन एट द एंड जो आपके नीचे आके इम्पैक्ट प्लेयर थे शाहिद अफरीदी उसके साथ फिर राउंडर्स हमारे पास भी था अब्दुल रज़ाक उस वर्ल्ड कप में नहीं थे बट ओवरऑल हमारी जो स्ट्रेंथ थी वो नीचे भी मतलब यासिर अरफात था शाहिद अफरीदी ऑब्वियसली सुहेल तनवीर जिसको कि बैटिंग वाइज इतना लोग नहीं जानते थे बट वो
बड़ा अच्छा बैट्समैन था और नीचे से आके वो अच्छे रन उसने फर्स्ट क्लास में 100 भी थे जी। तो ओवरऑल बड़ी एक ज़बरदस्त हमारी टीम थी एंड वी प्लेड लाइक दैट एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड कप जितनी भी टीम ऑस्ट्रेलिया से जीते, श्रीलंका से जीते, हर टीम अगेंस्ट न्यूजीलैंड सेमीफाइनल जीते, बट ऑब्वियस यू कुड नॉट प्ले दैट वेल इन द फाइनल, जो कि हमें मुझे लगता है कि आराम से जीतना चाहिए था उस पिच पे। समहाउ अर्ली विकेट्स गई, गलतियाँ हुई, वी लॉस्ट दैट गेम फ्रॉम ऑलमोस्ट विनिंग दैट गेम, जो कि बहुत मुश्किल था हमारे लिए टू टेक दैट डिफीट। बट गोइंग इन टू 2009 विद दैट आई थिंक वो बहुत ज़्यादा फोकस भी थे सारे, यार पिछला वर्ल्ड कप हाथ से निकल गया तो नाउ इट्स अनदर चांस टू अस। राइट। और याद है मुझे अभी तक 2009 में जब गए तो हमारा स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ, 2007 से बिल्कुल अपोजिट स्टार्ट हुआ हमारा। एट द स्टार्ट लाइक 1992 वर्ल्ड कप, वही सिचुएशन, वार्म अप मैचेस हार गए, उसके बाद जब शुरू हुआ तो कोई समझ नहीं आ रही थी, कोई चीज़ को कम्बिनेशन नहीं बन रहा था, परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही थी। बट आई थिंक एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम द गेम अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जो कि हमें ज़रूरी था जीतना, कन्विंसिंगली हमने जीता, उनको लो स्कोर पे आउट किया एंड आफ्टर दैट वी जस्ट वन द गेम अगेंस्ट नेदरलैंड। नाइस। उसके बाद सेमीफाइनल में पहुंचे, वो हमें मार्जिन से भी जीतना था मैच। वंस वी वर इन द सेमीज आई थिंक फ्रॉम दैट टाइम डिफरेंट टीम थी, बिलीव ही डिफरेंट था। वो जो 2007 में हम इतना अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं, बट उस तरह की वहाँ पे फिर भी वो फीलिंग नहीं थी। 2009 में ऐसे लगता था जब हम सेमीफाइनल में पहुँचे हैं, साउथ अफ्रीका वर वेरी स्ट्रॉन्ग टीम एट दैट टाइम, बट somehow टीम को लगता वो मस्त है, नाउ इट्स जस्ट, तो वो जैसे हम सेमीफाइनल जीते, लाला की परफॉर्मेंस, फिर फाइनल में मुझे एक बड़ा एंड पे उसका याद है 2009 के फाइनल का, क्या मैं नेक्स्ट था, बल्कि नेक्स्ट नहीं था, मैंने पैड किए हुए थे, यूनिस खान नेक्स्ट थे जब मलिक और लाला खेल रहे थे, और अबाउट टू फिनिश द गेम, को 6-7 रन रह गए और फिर वो भी आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल विनिंग शॉट पे आ गया। तो यूनिस खान आया मेरे पास और यूनिस खान ने मुझे जो है ना कहा कि ऐसे करो, तुम बैट कर लो, अगर कोई आउट होगा तो तुम जाओगे। एंड इट वाज प्योरली, मुझे वो फील हुआ कि वो सिर्फ ये चाहता था कि अगर इसका वर्ल्ड कप पिछली जो 2007 ये फिनिश नहीं कर सका ना, तो उस ख्वाहिश थी उनके कि ये जाए विनिंग शॉट यही खेले। तो दैट वाज वेरी स्पेशल। और मुझे आज भी याद है कि अच्छा मुझे अंदाज़ा हो गया देख के कि मैं पैड वो जा रहे थे, 1 रन चाहिए अभी और पड़ा हुआ पूरा, तो वो एक स्पेशल मेमोरी थी। और फिर उसके बाद we just won the game. That's very nice of you. Yeah, that's very thoughtful of you. That's very nice. Shoaib, let me ask you. Let's go back to the 2007 final first. I guess you were heartbroken in the 2007 final, and then we'll come to 2009 glory. मैं जहाँ मिसबा भाई ने एंड किया, मैं यूनुस भाई का यहाँ पे ज़रूर बोलूँगा। आई थिंक ही डिड द सेम थिंग विद मी एज वेल व्हेन वी वन द फाइनल्स इन 2009। तो ही कॉल्ड मी एंड ही सेड के यू होल्ड द ट्रॉफी। अच्छा। या एंड दैट वाज special, man. That's very special. That's very special. That was very special. Very special. Good old days, Good old days. 2007. Getting emotional, man. Come on. I've got Shoaib Malik getting emotional on us right now. नहीं आ जाता है बंदा, हो जाए. That's okay. You did great, buddy. I understand the feeling of lifting that trophy. Yes. So you finish your story, then I have a question for स्पेशल होता है ना उस टाइम पे कि Yeah. कोई बंदा जो आपका टीममेट है, Yeah. वो उस टाइम पे मतलब इतना आपका वो ख्याल रखे उस तरीके Yeah, से। what a man Younis Khan, I must say. Yeah. And yeah, well played, man. So you've got to finish the story. You should ask the Story तो question. पूरी खत्म 2007 की लतीफ़ा सुना लें। नहीं मैं लतीफ़ा नहीं That's okay. सुना। So I want to ask Misbah you, question. since you're very emotional about this right now, I want you to take us back to the 2007 heartbreak, because वो game बिल्कुल हमारे grasp में आ गई थी, and of course because the two of you, you were the captain, you had that, that hard luck with that shot, and I know that you were very, very emotional because there were some images जो कि हम TV पे देख रहे थे, that you were almost as emotional as this right now, walking into the dressing room, if I'm not mistaken. हाँ बिल्कुल, आई गेस इमोशंस बहुत कम आते हैं मेरे फेस पे, और ये घर से भी कंप्लेन आती है।
लेकिन आ जाएं तो फिर रुकते नहीं. अच्छा. That's okay. I think I'll take a Yeah. minute. So I'll ask a question to Misbah, just changing the subject a bit. You won the World Cup 2009 में. 2007 World Cup, that blame, you know the shot you played, it's okay, it's part of the game. Yeah. As a cricketer, I was fine with it. Yeah. But people haven't forgotten it. Still, they talk about it. They keep asking us on Twitter, on Well, Ask why the Pavilion. can't they move on? Why can't they praise that this team qualified for the finals? That's a huge deal anyway. Can I answer that, Wasim? Please. So I'll tell you. I think one of the reasons why people can't move on, there are two things that happen. एक तो ये कि हमारी तारीख के अंदर हमें खुशखबरियाँ बड़ी कम मिलती हैं या मौके बड़े कम आते हैं जब मिलते हैं. हमारी उम्मीदों के जो पैमाने हैं वो इतने ऊंचे हो जाते हैं ना, हम इतना ऊपर कर देते हैं बाहर सेट के हम फिर जब डिसअपॉइंटमेंट होती है ना वो हम हजम नहीं कर पाते और वो एक ट्रॉमा होता है, वो हमारे साथ अटैच हो जाता है. और फिर तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमारे मीडिया का जो रोल रहा है माजी में, हम ये चीज़ें हम फिक्सेट हो जाते हैं. एंड देन अ लॉट ऑफ पीपल से अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन मीडिया और वो बार बार खुरेदते रहते हैं वो चीज़ फैंस के दिमाग में कि देखे ना ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था. एंड आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट वी बीन एबल टू डू विद द पेविलियन एंड आई डोंट वांट टू ब्लो आवर ओन ट्रम्पेट बट आई हैव टू से बिकॉज ऑफ पीपल लाइक यू कि यहाँ पे बैठ के वो जो पर्सपेक्टिव आया है गेम का फ्रॉम अ क्रिकेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द लेगेसीज टू द रीसेंट पीपल, हमारे लोगों को हमारे प्रोग्राम से बहुत सारों को समझ में आना शुरू हुआ है कि भाई अच्छा ठीक है यार होता है. Because I tell you, the 99 World Cup final, we qualified for the finals of the World Cup and we lost. Yes. Fair and square. And people still ask me कि आपका डिसीजन था टॉस जीत के बैटिंग करने का. अबे बे मोहल्ले की टीम है क्या, बाकी सारे के साथ क्या छुट्टी पे गए हुए थे? पूरी टीम का डिसीजन होता है, मैनेजमेंट का डिसीजन, सारे बैठ के डिसाइड करते हैं. वो जो गॉसिप चलाते हैं ना लोग और फिर वो जो मीडिया के अंदर गॉसिप चलती है, ये उसका नतीजा है कि our media comparatively comparatively is very sensible. I must say. वसीम भाई बात पता क्या है, बात ये है कि ना तो आप किसी एक शॉट से या एक इनिंग से मैच हारते हैं जो मैं एक समझता हूँ इट्स अ टीम गेम. ओवरऑल जो आपका थ्रू आउट जो मैच चलता है उसमें जो टीम बेहतर खेलती है और स्पेशली जो गलतियाँ कम करती है वो टीम जीतती है. तो कहीं ना कहीं एट द एंड कोई भी सामने हो सकता है. 2007 में मैं था, ऑब्वियसली 70 पे 6 के बाद आप उस स्टेज पे हैं जहाँ पे 4 बॉलों पे आपको 6 रन चाहिए. वहाँ से आप कोई भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि हम यहाँ तक भी पहुँचेंगे. लग रहा था कि 80-90 पे हम आउट हो जाएंगे और पारे. देन वो आपकी बात ठीक है कि हम वो सारी चीज़ें देखने की बजाय हम हार नहीं मानना चाहते. ऑब्वियसली जो डिसअपॉइंटमेंट है सबसे ज़्यादा वो जब आप डिसअपॉइंटेड होते हैं उस टाइम पे आपने जो टेम्परामेंट है उसको कैसे रखना. Because reason we are discussing this, Misbah, because I want Pakistan team to know that we are all behind them either way. Yes. They have achieved. खैर है, मतलब खैर है, कोई मसला नहीं है. They have कल फाइनल खेल रहे हैं यार. उन्हें जो अचीव करना था पाकिस्तान की रिस्पेक्ट के लिए, अपनी रिस्पेक्ट के लिए, जैसी क्रिकेट उन्होंने खेली है. ठीक है, अप्स एंड डाउन आते हैं, दूसरी टीमों पे आई हैं, वो नहीं उठ सके. इंडिया जैसी टीम नहीं हैंडल कर सकी प्रेशर. हम कह रहे हैं ना पाकिस्तान डिज़र्व नहीं करती थी, तो इंडिया को जी कैसे पहुंच गए थे. इंडिया को भी अगर आप देखें तो उन्होंने भी एक मैच पाकिस्तान वाला जीता और वो भी कैसे जीता, बड़ा फंस के मैच हो. उसके अलावा वो भी सारी दूसरी टीम एसोसिएट से जीते हैं या साउथ अफ्रीका से भी हार गए, जिस तरीके से फिर सेमीफाइनल हुआ. तो आई थिंक पाकिस्तान सम हाउ ठीक है, हमने 2 मैच खेले ऐसे. इंडिया वाला मैच ज़बरदस्त खेला, एक जिम्बाब्वे वाला मैच हम कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान बिलो आवर स्टैंडर्ड्स खेला. बट साउथ अफ्रीका से द वे वी जस्ट प्लेड, फिर बांग्लादेश से हम जीते, फिर सेमीफाइनल वन ऑफ द बेस्ट टीम जो थी न्यूजीलैंड से जीतना, और जिस तरीके से हम जीते. वट वी आर ट्राइंग टू अचीव एज अ टीम, वी अचीव दैट. ठीक है, फाइनल इज जस्ट अ गेम, कुछ भी हो सकता है. बट आई थिंक स्टिल चाहे आप जैसी मर्जी परफॉर्मेंस हो, वी शुड बैक दैम, वी शुड प्रेज दैम. Absolutely. No pressures, go there, play your best
And then whatever the results are, I think heads off. Yeah. Zabardast The idea that performance, we're jo bhi playing team. the final is celebration enough for us. Waqar, you wanted to say something? Yeah, just I mean, I just want to echo what these two greats have said this. मेरा सिर्फ एक छोटा सा मैसेज है नेशन के लिए और हमारे जो मीडिया है और हम सब के लिए भी मैसेज ये है कि यू नो वी आर अ ग्रेट नेशन, डोंट फॉरगेट, ठीक है ना। और क्रिकेट एक खेल है और खेल में हार जीत होती है, यू नो दैट्स अ पार्ट ऑफ इट। इंटरटेनमेंट भी है इसको, रिमेंबर दैट। एंड मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा ये टीम हमें इंटरटेन कर सकती थी। अभी भी जो मैसेजेस ऑस्ट्रेलिया से भी आ रहे हैं, द इमोशंस आर सो मच इन्वॉल्व। आई नो वी ऑल वांट टू विन दिस, वी ऑल वांट टू सी दैट ट्रॉफी कमिंग टू पाकिस्तान, बट इफ़ इट डजंट हैपन, गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे कि अगर ऐसा कभी हो कल, तो it is okay. It's not the end of the world. We have given the best we could. So keep your chins high, and also all the best to the team. Yeah, Shwet. ते हाथ होला रखना। ट्विटर मिल गया, अंडरस्टैंड। नहीं मतलब कि हर कुछ बोली जाओ, 24 घंटे बोली जाओ। Sorry, Shwet, you were saying. 2007 World Cup beginning was we started our beginning from Karachi. हमारा कैंप लगा था, and I still remember कि आकिब भाई ने he made sure we play enough matches, and we played around 15 matches जो हमारे आपस में जो था, क्योंकि बाकी भी जो लड़के थे, जो A टीम के भी लड़के थे या जो अच्छे परफॉर्मर थे, तो वो सब लोग हम लोग कराची में थे। He made 2 teams and we played around 12 to 15 मैचेस। और उसके बीच में हमारा वर्ल्ड कप से पहले कीनिया में भी मैचेस वर ऑर्गेनाइज्ड बाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और हमें इतनी प्रैक्टिस हो चुकी हुई थी हर टाइप की क्रिकेट खेलने की कि हम एक स्टेप अहेड थे बाकी टीम से। इसीलिए आप देखें कि 2007 वर्ल्ड T20 हम लोग ने डोमिनेट किया। हम लोगों ने बड़ी टीम्स को भी हराया वहाँ पे, और हम लोगों ने डोमिनेट करके हराया। अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट विन द फाइनल्स, लेकिन उससे ये था कि हमारी प्रेप इतनी अच्छी थी कि हमें ऐसा लग रहा था कि हमारे साथ कोई भी टीम आके मैच खेले हमारे साथ, हम देखते हैं आप लोगों को। तो आई गेस थैंक्स टू आकिब भाई एंड द होल मैनेजमेंट कि उनका जी तो ये उन्होंने ये सारी चीज़ें सोची, और उसके बाद हम वर्ल्ड कप में थे। एक चीज़ थी हमारा जो कोर था, वो ऑफ डेज हों या मैचेस नहीं हो रहे, प्रैक्टिस सेशंस नहीं हो रहे, हम लोग एक जगह बैठते थे। हम साथ में खाना खाते थे, हम साथ में बाहर जाते थे, तो हम एक फैमिली की तरह थे। उसका बहुत ज़्यादा जो था, हमें एक दूसरे की गेम भी समझ आ गई हुई थी, हमें ये भी आ गया था, हम खुश होते थे कि यार ये परफॉर्म करेगा, ये टीम जीतेगी। तो आई गेस उसमें हाँ, थैंक्स टू लाला एज वेल, ही वॉज वेरी हेल्पफुल थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। सिर्फ फाइनल में एक थोड़ा सा जो था वो मुझे लगा कि इमरान नज़ीर बहुत अच्छी फॉर्म में था। बिल्कुल था, और वो सेमी में इमरान नज़ीर जो है इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट, ही गॉट रन आउट। अगर वो रह जाता 6 ओवर बस तो मैच वहीं पे खत्म हो जाना था, लेकिन ही वाज स्ट्रगलिंग। इमरान नज़ीर वाज वे अहेड ऑफ टाइम अपनी बैटिंग में। जो आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट है वो तब वो वाली खेलता था। 20 प्लस का ओवर उससे पहले लगाया था, 20 प्लस का उसने ओवर लगाया श्रीशांत को, एंड नेक्स्ट ओवर ही गॉट रन आउट, सो दैट वाज अ बिग ब्लो। और वी वर चेजिंग 157, सेकेंड ओवर उसने 22 रन का लगा दिया था, और अगर वो 2-3 ओवर्स खेल जाता खत्म था मैच। फिर वो था, या ये हमारे मिसबा भाई थे जो हमें इतना करीब ले गए। और आई थिंक सुहेल तनवीर के भी 2 छक्के लगे हैं, एक मेरा ख्याल यासिर का लगा है और एक सुहेल तनवीर का लगा। बड़ा इंपॉर्टेंट 1-2 छक्के उसने मारे थे। सुहेल ने 2 छक्के मारे, तो आखिरी बॉल था वो, श्रीशांत ही था। सुहेल को मैंने कहा, सुहेल नाउ वी गॉट एवरीथिंग अंडर कंट्रोल, नाउ दिस बॉल यू डोंट लूज विकेट, गेम ओवर है, बस आउट में ही काम खराब हो रहा है, क्योंकि वो उसने वो ओवर लगा दिया था। एक और मारन देना चाहिए, वो 8 आउट सी उन्हें मारे कोई कीता ना, क्योंकि ਉਹਦੀ ਲੱਤ गेंद आ गया थी, ਲੱਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ नहीं थी रुकदा बल्ला, वो जाता था यूं करके, वो ही हुआ। क्योंकि जो नेक्स्ट ओवर था ना, वो मुझे अभी भी याद है, वो
लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, क्या नाम था उसका, वो उसका ओवर था और वो जिस लेंथ पे बॉल कर रहा था, वो जिस लेंथ पे बॉल कर रहा था, यही उचित है, वो आइडियल ओवर था सुहेल तनवीर के लिए। तो मैं उसको इसीलिए मैंने कहा अगला ओवर तू इस बॉल पे एक ले ले, अगला ओवर तो तेरे बिल्कुल, वो तो गेंद ही यहाँ कर रहा है क्योंकि वो बाहर निकलता है उसका गेंद, उसको अंदर आना था और साइड बाउंड्रीज बहुत छोटी थी। बट वी जस्ट केप्ट ऑन लूजिंग विकेट्स एट द रॉन्ग टाइम। यासिर भी बड़ी गलत टाइम पे आउट हुआ, लाला, मलिक, इवन वो एक भी पार्टनरशिप होती तो थिंग्स कुड हैव, बट एट द एंड एक टाइम तो ऐसा आ गया था वहाँ पे उनके कुछ मेन बॉलर्स थे, उनका एक ओवर रहता था। तो अब नाम लेना अच्छी चीज़ नहीं है, उनसे दोस्ती भी है। तो धोनी ने पूछा उन 2-3 मेन बॉलर से कि यार तू आखिरी ओवर कर आ गए, सब ने मना कर दिया। ओह वाह, सब ने मना कर दिया था कि नहीं, हमने नहीं ये लास्ट वाला ओवर नहीं करना, हमारे सामने एक जिन खड़ा हुआ है। और ही वाज हिटिंग ऑल ओवर द ग्राउंड, we all remember he was hitting all over the ground। we all remember that। लेकिन आई गेस लेट्स गेस कौन से बॉलर थे। हरभजन थे ये, मैं कह रहा हूं उसी में तुसी फिट ट्रेंड करना है। हरभजन था, श्रीशांत था, मैं भी गूगल कर आरपी सिंह था, anyway the thing is, here's the thing, जोगिंदर था ना जिसने लास्ट ओवर किया, जोगेंद्र शर्मा बोल्ड द लास्ट ओवर और इतना बड़ा चक्का मारा है वो सामने वाला याद है, रिमेंबर। फिर इन्होंने कहा कि एक मैं पीछे का भी मारता हूँ। But I think that was the shot which I was playing throughout the World Cup. लास्ट विकेट ना होती, लास्ट विकेट ना होती, ये सामने बैठे हुए हैं। आई एम श्योर आप उसको सामने ही ट्राई करते हैं, सिर्फ लास्ट विकेट के चक्कर में चलो उसके ऊपर से चली जाएगी, 2 रन मिल जाएंगे एटलीस्ट। वो जो विकेट थी वो यही था मुझे कि यार चौका मार के ना 1 रन रह जाएगा, देखिए फील्ड ऊपर बुलाएंगे, फिर मैं जिधर मर्जी मार लूं। जोगिंदर क्योंकि स्लो सी, तो होर स्लो हो गया। आई थिंक दैट्स द रीजन वो डिडंट गो। और वो आउटसाइड ऑफ स्टंप भी था बहुत ज्यादा। और you have to give it to Dhoni, full credit to Dhoni as a captain. He I think it's one of the best in the world, because after all his main bowler said no, ठीक है ना। वैसे अगर 3 ओवर्स में आई गेस 49 रन्स चाहिए थे, तो 2 ओवर्स में तो कितने बन गए थे? अगर 49 चाहिए थे तो 35 या 36 रन बन गए थे। 56 चाहिए था, तो लास्ट ओवर में 12 रह गए थे, उन्होंने कहा 13 रन, एक वाइट बॉल भी हुआ था, एक आपने छक्का मारा था। तो anyway, great memories, you know। फिर उसके बाद 9 वाला जो है वो तो उन्होंने सारा बताया, वो तो बता दिया। और बड़ी जबरदस्त बात बताई आपने यूनुस की आज हमें, ग्रेट थिंग। बीच में सेमीफाइनल में एक ऐसा भी हुआ, हर कैप्टन चाहता है कि वो अच्छी चीज़ हो। हम लोग साउथ अफ्रीका से खेल रहे थे सेमीफाइनल, तो उमर गुल एक एंड से बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था। वो 5 रन का ओवर, 6 रन का ओवर दे रहा था, वो इससे ज़्यादा रन वो नहीं दे रहा था। तो अब 2 ओवर्स रह गए, तो अब उमर गुल ऑलरेडी बॉलिंग कर रहा था, राइट। तो उन्होंने कहा कि उमर गुल ने शायद कहा है कि मैं लास्ट वाला ओवर करूँगा, तो आप ये ओवर आमिर से करवाएं। तो मैं मिडॉन टू मिडॉन भाग रहा था, तो मैं बीच में रुक गया। मैंने कहा नहीं यूनुस भाई, ये ओवर उमर गुल ही करेगा, लास्ट आमिर करेगा, क्योंकि ये सेम एंड से बॉलिंग कर रहा है और सेकंड लास्ट ओवर मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवर होता है, जब 29 या 27 रन चाहिए थे 2 ओवर, ताकि आखिरी ओवर तक गेम जाए ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये नहीं होगा। मैंने कहा यूनुस भाई प्लीज़ ये कर दें, नहीं तो मुझे बाहर भेज दें या मैच मेरे पे डाल दें। लेकिन थैंक्स टू यूनुस भाई, उन्होंने उस बात को माना और उन्होंने उमर गुल से ही ओवर करवाया। उसने 5 या 6 रन का ओवर दिया। फिर लास्ट ओवर में 17 या 18 रन बन गए थे, तो हम 4 या 5 रन से हम वो वाला मैच जीते। चाहिए थे और 17 बन गए। मैंने उसके बाद यूनुस भाई से ना बहुत ट्राई की वर्ल्ड कप जीतने के बाद। मैंने कहा कि आप नहीं छोड़े T20, आप खेलें, क्योंकि अब एक बहुत अच्छा ग्रुप बना हुआ है, तो ये आगे लेके चले इस लेगेसी को। लेकिन he has decided to move on from T20 cricket, but I guess he brought us lots of memories। और जो भी associated थे 2007-9 वर्ल्ड कप में, थैंक्स टू एवरीबॉडी, बहुत क्लासिकल जो थी वो जर्नी थी। सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि हम लोग, हमारी बैटिंग बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हम लोग कैसे, ओपनिंग ऊपर से स्कोर नहीं हो रहा था, कामरान थोड़ा बहुत कर रहा था, बाकी कोई कंट्रीब्यूशंस नहीं आ रहे थे। जस्ट बिफोर द सेमीफाइनल सडनली वी वर सिटिंग टुगेदर, यूनुस भाई ने ऐसे बैठ के ना बुला के, हम भी बैठे तो कहते हैं यार मैं सोच रहा हूँ लाला जो है ना वेस्ट हो रहा है नीचे,
ऊपर हमें स्टार्ट नहीं मिल रहा, वही जो हम टेम्पलेट की बात कर रहे थे। यार मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लाला को ऊपर भेजें, अगर कर देगा नीचे हम होंगे, कर देगा लाला तो उसका स्कोर जो वो ऊपर कर देगा तो वो फिर मैच ही एक साइड पे हो जाएगा। हम सारे बैठे हो तो हमें भी लगा कि हाँ यार ये बात तो ठीक है कि नीचे बारी नहीं आ रही या फील्ड खुली में उस तरह। हमने कहा हाँ ठीक है यूनुस भाई ये ठीक है आइडिया। एंड जस्ट फ्रॉम नोवेयर सेमीफाइनल फाइनल में लाला गया, लाला ने वो अकेले ही मैच जिता दिया दोनों। स्टोरी भी अगेंस्ट न्यूजीलैंड है तो ये रन रोकेगा because we're going to have to take a break. When we come back, we are going to listen to that story. You're watching the Pavilion on A Sports and the AirWise app. Don't go away. वेलकम बैक टू द पेविलियन। मैं फ़खर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड द एयरवाइज ऐप। कुछ लम्हात पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर आप शॉट्स देख रहे थे। हमारी टीम जो है वो नेट्स कर रही थी, प्रैक्टिस सेशन में थी मेलबर्न में, और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज़ राजा भी वहाँ पर मौजूद थे। टीम के साथ भरपूर तरीके से प्रैक्टिस सेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे, लड़कों से बात भी कर रहे थे। इस टाइम पे व्हाट वुड द चेयरमैन बी सेइंग टू द प्लेयर्स? I think he's just there as a cricketer right now. Right. The practice पे गया है. Obviously he's a chairman. Just as a cricketer, maybe sharing his experiences. 92 World Cup के winner तो रह चुके हैं ना 92 World Cup के. Right. To just give them a bit more confidence. I suppose that's why he was there. I think he's only there. He's just not there for the finals. He's there to attend the ICC meeting. I think it's after the finals. After the finals. That's interesting. ये तो हमने देखे नेट सेशंस पाकिस्तान टीम के। दूसरी तरफ वकार इंग्लैंड की टीम का भी प्रैक्टिस सेशन हो रहा था, और जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि मार्क वुड बड़े पेस के साथ उसमें बॉलिंग कर रहे थे नेट्स में, and even David Malan was actually running around and stretching and all that. So I न्यूज़ ले आए हैं। वो मैंने एक्चुअली आज देखी थी। थोड़ा जो ओवर के थे आज एक्चुअली आपने बड़े गौर से देखा है इस वीडियो को, which is fine. I mean, अगर दोनों फिट हैं तो it's good for the game. Yes, because I was hoping that they were not fit for the game, but David Malan ऐसे मैच नहीं जीत जाते। अब पाकिस्तान टीम को कॉन्फिडेंस आया, जो मर्जी ले आओ, जो मर्जी ले साथ में, ये भी है। That's true. That is तराना कटो। No. हमारे पास 4 हैं, कोई मसला नहीं। Just somebody tweeted this guy. बताता हूँ मैं भी आपको, हैंग ऑन अ मिनट। तो जब तक वो ढूंढ रहे हैं मैं आप लोगों को बताता चलूं कि आस्क द पेविलियन, ये हैशटैग आपको अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर नजर आने लगा है। Here it comes up, ask the pavilion. There you go. Ask the pavilion हैशटैग ट्विटर के ऊपर इस्तेमाल कीजिए और हमें अपने सवालात भेजिए, या कोई कमेंट्स आप शेयर करना चाहते हो, कोई चीज़ हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, वीडियो, तस्वीर, प्लीज़ लेट अस नो ऑन आस्क द पेविलियन राइट नाउ। कुछ देर बाद हम आपके सवालात देंगे। जी वसीम, ये किसी न्यूज़ चैनल, आई थिंक इट्स कॉल्ड एक्सप्रेस स्पोर्ट्स, अपना ही है ये, कि व्हाट वाज वसीम अकरम्स SOS जस्ट बिफोर 92 वर्ल्ड कप फाइनल? He wanted Melbourne restaurant owner Iftikhar Shah to get him a biryani. Akram didn't want the sandwiches served in the dressing room. so did you order a biryani? SOS? I don't remember. Probably right, because I doubt कि तब sandwiches पसंद थे हमें 24 साल की उम्र में. We weren't very sandwichy I can guys understand then. I having a biryani emergency. I cannot understand you having a biryani emergency. When you're 23, everything goes by. Yeah, that's true. You just had a whole dig of Halim. I did. And it wasn't dinner, it wasn't lunch, it wasn't even tea time. It was very random time that was. It was in between. In between. It was my lunch break between the lunch break and the dinner. They call it sapa. Sapa. बिरयानी ओके, अगर अपनी क्वांटिटी के हिसाब से खाएं वो तो बाकी देख खाने हैं। वैसे ही वसीम भाई, अगर आपने बिरयानी खाई भी है तो इट्स गुड, क्योंकि अगर आप Yeah, खेल probably रहे हैं खाई आपको होगी। सब कुछ खाना चाहिए। Probably, आपको यार सब कुछ खाना मुझे चाहिए, वरना आपको ये कैसे स्पिरिट में चाहता हूँ। नहीं, वरना तो आपको इसी में बात जान हो कैसे हमेशा। आएगी मलिक आपने? वो भी तो काम ही कर रहे हैं सारी ना। टीम है ना बिरयानी खा के और पहुंची यार है भाई। ये ऐसे नहीं मैं बोल रहा, मेरे जो वो न्यूट्रिशनिस्ट है उसने कहा है कि अगर आप ऑलिव ऑयल की बिरयानी खा रहे हैं खेलते हुए में तो वो ठीक है, आपको कार्ब्स चाहिए, तो इसमें कोई ऑलिव ऑयल की बिरयानी खा रही है। हाँ भाई, ये प्रोडक्शन वाले सुन लें कि मेरे लिए ऑलिव ऑयल की हलीम वलीम आनी चाहिए कल से। देखिए भाई निहारी भी ऑलिव ऑयल वो भी तो काम ही कर रहे हैं ना, तो काम के दौरान अगर आप खेलते हैं तो इसलिए आप खाते हैं। But I've वो जो seen उनका him काम है, जहाँ उनकी sweating. एक्सर्शन होती है, जहाँ उनकी कैलोरीज बर्न होती हैं,
That's where he eats. बिल्कुल I've ऐसी- seen him लेकिन कितने- sweating in the आप ऐसी gym. बातें हर वक्त क्यों नहीं करते वकार? बड़ा मुश्किल हर वाली होता है, कोड़ी कोड़ी करता है मीठी मीठी गलियां बड़ा मुश्किल होता है बिकॉज इन उसके लिए ना- तीनों को उसके टेक लिए ऑन करना यही शर्ट पहननी है यही बस। शर्ट पहननी है, वो पीली वाली नहीं, कुल्फी फलूदे वाली जो थी हमारी शर्ट जो वकार में मैंने सेलेक्ट की, चलें जी मैंने सेलेक्ट कर ली, डाल दो मेरे थे, ठीक है मैंने मान लिया ला दे मेरा नाम। मैंने मान लिया, लेकिन आप इतने सियाने लोग हैं, मेरा मतलब है चारों, आप तुसी भी पा ली यारी दोस्ती ਅਸੀਂ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਪਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। That's the way to do it. That's the way to do it. That is absolutely. 92 के वर्ल्ड कप की और बिरयानी की बात हो रही थी। 92 का एक बड़ा जबरदस्त पैकेज आई है, इस पे नजर डालते हैं जरा। जब से पाकिस्तान सेमीफाइनल में आया, उसकी मौजूदा कामयाबी को 1992 की फतह से कंपेयर किया गया। सेमीफाइनल न्यूजीलैंड से, 92 में भी, इस बार भी। एडिलेड के एक पॉइंट ने 1992 में मदद की। इस बार एडिलेड में जनूबी अफ्रीका से 2 पॉइंट्स मिले। 1992 में ऑस्ट्रेलिया की वेस्ट इंडीज पर जीत ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचाया। इस बार हॉलैंड ने जनूबी अफ्रीका को हराया तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में आया। 1992 के फाइनल में भी हरीफ इंग्लैंड, इस बार भी अंग्रेज। 92 में भी किसी को टीम की कामयाबी का यकीन न था। इस बार भी सब हैरान परेशान। 1992 में भी पहला मैच मेलबर्न में हारे। 2022 में भी यही हुआ। 1992 में भी ऑस्ट्रेलिया दिफाई चैंपियन, इस बार भी टाइटल उसी के पास था। 1992 में ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज से बाहर हो गया। इस बार ऑस्ट्रेलिया सुपर 12 से बाहर हुआ। 1992 की याद ताज़ा करने के लिए हमने एमसीजी के स्टोर से 2 यादगार चीजें निकलवाईं। Hi, so we're here at the MCG and at the Australian Sports Museum housed there. And what I've got with me today is a cap worn in 1992 by Imran Khan and one of the balls used at the 1992 final. So obviously tomorrow Pakistan's going to play England again and we're hoping for a good match. इतनी कॉमन चीजें, फिर तो कब जीतना ही होगा। कैमरामैन अकील सैयद के साथ शाहिद हाशमी, ए स्पोर्ट्स, मेलबर्न। बेहतरीन रिपोर्ट शायद हाशमी साहब की तरफ से। He's been there in Australia doing an outstanding job there. Well, you see that ball from the 92 World Cup? That cap? and the cap. Yes. हमारे पास तो कुछ भी नहीं है. Nothing. Seriously? Yeah, you know when you play cricket, you don't even remember, you don't even bother. अब रिटायर होकर पता था यार एक आधी चीज तो रखनी चाहिए थी, या टोपी या हेलमेट, anything, or a t-shirt, nothing. I think I have just a medal. Probably I try to bring it tomorrow. Oh, that would be amazing match if you का. did. Yes, yes. But वो मुझे जे कह रहा था मेडल ढूंढो, मैंने कहा it'd be like finding a needle in a haystack. अब कहाँ से मेडल ढूंढूं मैं? But I'll have a look around. Okay, we were talking about, but you know what? Thank you for those memories. To actually, all four of you, I want to say thank you for some great memories. All of you. That's like what you've done for this country and for our cricket. Just thank you for the memories. Quickly, Misbah, by the way, एक memory थोड़ी सी इस पे बात करनी जरूरी है. Sure. भाई जिन्होंने जेडे डंडे तुसी हिलाए सन क्रिस लुइस दे. Oh yeah. Round the wicket, सब की तरह इंज गेंद सांप की तरह करके कैसे? Please. मैंने पहला क्रिस लुइस से ज्यादा जो उसको दूसरा जो क्रिकेट लवर्स है, लैब को that was a beauty. पहला गेंद was more difficult. Yes. Because उसकी भी स्टोरी है. परफेक्ट बॉल. या वो मैं नील फेयरवेदर सेंट पे खेल रहा था और वो अभी बात कर रहे हैं तो गूज बम्स आ रहे थे. या वर्ल्ड कप ख्याल आया तो उसने नॉकिंग कराई सी उन्होंने. या नहीं तो वो he was one of the best one day players. Yes. He was on that path. And Alan Lamb was one of the best one-day players. Period. Of that era. No question. और पाकिस्तान के अगेंस्ट रिकॉर्ड भी उसका बड़ा जबरदस्त था. मेरा हम स्मिथ को ड्रॉप करके शायद उसको खिलाया फाइनल भी. So जब मैं आया हूँ 35 ओवर में आया हूँ, if I remember, 34 ओवर में ब्रेक था और 2 बॉल थे, तो स्किपर ने कहा इस एंड से हल्का सा रिवर्स हो रहा है, पवेलियन एंड से 2 विकेट चाहिए. मैं कहा 2 ओवर के लिए जोर लगाओ. Pavilion end. So मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा मैं इसको राउंड द विकेट बाहर निकालता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मिडिल से निकालूँ ताकि एज लगे या डंडा उड़े. कह रहे गुड आइडिया, जोर पूरा लगाना. तब तक आई थिंक वो मेरी जो रिकवरी हो चुकी हुई थी पहले स्पेल की जो 5 ओवर गए थे ना, जोर लगाया था, फिर बैटिंग भी की थी, तो वो रिकवरी हो गई. तो नील फेयरवेदर ने मुझे बाद में बताया कि ही वेंट अप टू एलन लैम. एलन लैम मुझे कम खेला था काउंटीज़ में,
उसने कहा कि लुक ही इज़ गोइंग अराउंड द विकेट, इट मीन्स इट्स रिवर्सिंग, इट मीन्स इज गोना गो वाइड ऑफ द क्रीज, तुम्हें ऐसे बाहर निकालेगा बॉल। तो एलन लैम ने कुछ नहीं समझ आया बिकॉज उन दोनों लेफ्ट हाल ना बॉदर नहीं किया। एग्जैक्टली, सो एलन लैम ने सोचा होगा कि लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट वाइड ऑफ द क्रीज, बॉल बाहर कैसे निकालेगा ये, यू नो दैट प्रॉब्ली ही वाज थिंकिंग। सो फेयर बदल सेट के फेयर बदल देखा कि मुझे सिर्फ रोक रहा था, उसका बल्ला भी पीछे नहीं जा रहा, मुझे वो सिर्फ ब्लॉक कर रहा था, एक दो जो गेंद मेरी खेला है। तो एलन लैम को जब मैंने किया तो वो आई मीन ऊपर वाले का, रमज़ान का महीना, माँ बाप की दुआएं, सब लोगों की दुआएं, ऊपर वाले की हेल्प, वो एक्चुअली जहाँ चाहता था वहीं बॉल पड़ा और इट क्लिप द ऑफ स्टंप। और नेक्स्ट बैट लुइस आया तो मैं क्या करना चाह रहा था, गेस कर मेरा क्या दिल था अराउंड द विकेट लुइस को पहला बॉल करने का। यॉर्कर। यस, मैं क्या अंदर आता हुआ यॉर्कर करूँगा। स्किपर ने कहा नहीं, इमरान ने कहा हैंग ऑन अ मिनट, मैं कहा हाँ जी, कह रहे ये तैयार होगा यॉर्कर के लिए, इसको लेंथ बॉल अंदर लाओ। So that's why I brought the शाइन अंदर रख के ऑब्वियसली थोड़ा ऐसे करके, फिर मैंने एक सेकंड के लिए विजुलाइज किया कि मैं ऑफ स्टंप के बाहर मारूंगा, इतना अंदर आएगा, ऐसे बोल्ड होगा, ये सोचा था बट वो हो गया। हल्की सी एज लगी यार इन टू द स्टंप्स। वसीम भाई दैट्स द वसीम भाई अगर यॉर्कर भी पड़ जाता ना, तो जिस तरीके से वो क्रॉस गया हुआ था ना, उसके लिए बुरा, उसका बुरा हाल होगा। लेकिन जो दैट्स द एडवांटेज ऑफ एन ऑलराउंडर। इमरान भाई को भी एडवांटेज आपको भी था, क्योंकि जब आप बैटिंग भी साथ करते हैं तो यू नो बेसिकली द साइकी ऑफ द बैट्समैन ऑल्सो, आपको आइडिया होता है कि एज अ बैट्समैन ये क्या सोच रहा होगा, तो आप हमेशा उसको आउट थॉट करने के लिए आपके पास वो होता है। नॉर्मली जो बॉलर होता है तो वो यही सोच रहा होता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, और कई दफ़ा उस पर अच्छा बॉल करके भी आपको वो रिजल्ट नहीं मिलता। मिसबा, आप एक बात कर रहे थे अभी पीछे ब्रेक में कि हम इस वर्ल्ड कप की और कल की बात कर रहे हैं कि अगर इट डजंट मैटर कि कल क्या रिजल्ट आता है, वेदर वी लिफ्ट दैट ट्रॉफी और वी डोंट, इट डजंट मैटर, बट व्हाट वी हैव टू आल्सो स्टार्ट और कीप इन माइंड दैट देयर इज़ अ जर्नी बियॉन्ड दिस वर्ल्ड कप, और पाकिस्तान की क्रिकेट के जो आने वाले दिनों के मामलात हैं उनकी भी हमें नज़र एक बड़ी उस पर रखनी चाहिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने जो अचीव करना था इस वर्ल्ड कप में कल, ओके फाइन, इफ़ यू विन द ट्रॉफी टुमारो, ये आइसिंग ऑन द केक है, बहुत बड़ी अचीवमेंट आपकी, उसको सेलिब्रेट करें, सारा कुछ करें। नहीं भी होता कोई नहीं, फाइन, आपकी टीम, हमने पहले ही बात की, ज़बरदस्त के लिए। बट व्हाट आई वांट टू से, और जो पाकिस्तान बेसिकली देखना चाहता है कि ये जो परफॉर्मेंस है यहाँ तक आने की, और अगर हम जीत भी जाते हैं, इस पे बिल्ड करना है हमने आगे पाकिस्तान टीम को, पाकिस्तान की क्रिकेट को, क्योंकि प्रीवियस हमारे जो एक्सपीरियंसेस है वो इतने अच्छे नहीं है। 92 के बाद टीम बनी, 92 तक बड़ी ज़बरदस्त टीम बनी और वो नज़र भी आया ओवरऑल आपको परफॉर्मेंसेस, बट उसके बाद जब भी हमने 2009 के वर्ल्ड कप के बाद भी अनफॉर्चुनेटली हम उस तरीके से ऊपर नहीं गए क्रिकेट में, हमारी परफॉर्मेंसेस समहाउ नीचे आई, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस हुए। 2017 चैम्पियंस ट्रॉफी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, बहुत ज़बरदस्त यंगस्टर आए, उनकी उस पर हमने जीती वो, बट जिस तरीके से हमने 2019 तक बिल्ड करना चाहिए था उन परफॉर्मेंसेस पे, वो नहीं कर पाए, और बीच में हम सीरीज़ें हारे, फिर वर्ल्ड कप से पहले हम लोग 5-0 हो गए ऑस्ट्रेलिया से, और साउथ अफ्रीका में जाके हारे, इंग्लैंड से 5-0 हार गए, फिर वर्ल्ड कप में भी उस तरीके से नहीं। तो हमें बेसिकली सब अच्छे की रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। आफ्टर दिस व्हाट वी आर डूइंग गुड, जो अच्छी चीज़ें उस पर बिल्ड करना है, जहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि ये एरियाज़ हैं जिनमें हमने इम्प्रूवमेंट करनी है, हमें वर्ल्ड फ्रॉम द नेक्स्ट डे हमें उन पे सोचना है और उन पे काम करना है, ताकि यहाँ से हमारी परफॉर्मेंस एज ए टीम, एज ए क्रिकेटिंग नेशन, नीचे या ऊपर, वो बेहतरी की तरफ जानी चाहिए। हम क्या होता है कई दफ़ा हम एज प्लेयर्स भी रिलैक्स हो जाते हैं ऐसी परफॉर्मेंस के बाद कि ओह हमने बड़ा अचीव कर लिया, एंड सडनली वो जो इम्प्रूवमेंट है वो रुक जाती है। हम कई दफ़ा उसको इतना ज़्यादा इंजॉय करने चले जाते हैं उन चीज़ों को, और इतना ज़्यादा उसको वो करने चले जाते हैं कि हमारी जो बेसिकली जो उससे आगे क्रिकेट होती है वो हम उसको फोकस नहीं कर रहे। तो ये मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ से जो भी परफॉर्मेंस हुई है, जीतते हैं या जहाँ तक पहुँचे हैं, हम आगे सोचेंगे हमने इससे आगे बेहतरी की तरफ जाना है, बिकॉज नेक्स्ट ईयर 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप है, और उसमें हमें इस परफॉर्मेंस के बाद अपनी कंडीशंस में वी कैन डू वंडर्स। ओके, दैट इज चीज़ पे अब वापस आ जाते हैं जी। लेट्स नॉट टॉक अबाउट
what's going to happen tomorrow. Let's just talk about we are lifting the trophy. Inshallah. That's it. Inshallah. Yeah. Okay, very good. All right. बस अभी इसी पे रखते हैं. Positive frame of mind. Yes. Very good. Waqar, let me bring this to you. Let me bring this to you. Misbah just said कि अब अगले साल फिर हम 50 overs में आ जाएंगे. How do we capitalize on what we've achieved here in the 20 overs and then expand it another 30 overs and make this the longer format? देखिए जब sometime क्या most of the time जब success आपको मिलती है ना तो जो आपकी कमियां होती हैं ना वो अंडर द कार्पेट चली जाती हैं. उनको नहीं जाना चाहिए. ये जो मिसबा ने अभी बात की है ना कि जो पहले हम जब भी जीते हैं या जब भी अच्छा कर रहे होते थे तो लोग क्रेडिट लेना शुरू करते थे. आई एम ऑल फॉर इट के बिकॉज इफ़ यू हैव डन वेल यू डिजर्व द क्रेडिट. हम सबको डिजर्व क्रेडिट करते हैं. हमारा मुल्क जीता है लेकिन उसको फिर अंडर द कार्पेट नहीं करते क्योंकि जब हम हारते हैं या हम बुरा करते हैं तो हम क्या करते हैं हम सारा कुछ ही फिर खोल लेते हैं. अच्छा भी जो किया होता है उसका भी खिलारा पा लेते हैं. सो आई फील कि जब हम अगर इंशाल्लाह अगर हम जीतते हैं कल तो आई थिंक वन शुड नॉट फॉरगेट इवन हम नहीं भी जीते अल्लाह ना करे we still should just look at where the faults are, where कमियां कहाँ हैं. कमियों को पूरा करना बड़ा ज़रूरी है. 50 ओवर क्रिकेट आ रही है आगे फिर अगला T20 वर्ल्ड कप इज जस्ट ईयर आफ्टर दैट. सो देयर इज सो मच क्रिकेट गोइंग ऑन. देयर इज इंग्लैंड कमिंग नाउ. देयर इज so much happening. So I feel ke let's win this, as Malik said, ke let's not go too deep into what we should do afterward. But yeah, अगर अल्लाह करे हम अच्छा करते हैं जीतते हैं तो let's find our कमजोरियाँ और उस पर वर्क करें. Yeah, that is very, very important. Sorry, Wasim, you wanted to ask something. I forgot now. That's fine. That's okay. इस उम्र में होता है. इस उम्र में होता है. इस तरह के कामों में ऐसा भी होता है. Let's now quickly talk about. So I know कि हम कल सुबह आएंगे और हम बहुत ज़्यादा प्री मैच के ऊपर जो है वो बात करेंगे सारी की सारी. But थोड़ा सा जो एक दो चीज़ें हैं हम उनको ज़रा नज़र डाल लेते हैं. We have started clicking. जी ये एक कुछ चीज़ें दिखाई. क्या है हमारे पास पैकेज तस्वीरें हैं कुछ 92 के वर्ल्ड कप की. सॉरी माय प्रोडक्शन ये जरा शेयर करें प्लीज. ये क्या मेमोरीज हैं. वही जो वकार को ट्रक पे बिठाया था. रिमेंबर वी कैन सी वकार ने ट्रक पे चढ़ाया सी. ट्रक पे चढ़ाया सी तो वो मुशी खड़ा आगे. ब्लैक में इंजी है जी. ब्लैक में इंजी है. राइट पे मैं हूँ. लेफ्ट पे मोइन है. और आई थिंक ये माइक वाले जो हैं यूसुफ सलाउद्दीन है, if I'm not mistaken. Okay. Yeah, I think so. Yeah. That's right. This was the trip from airport to the hotel PC. We had jumped off. यार रेट गलती की नोटों वाले यार नहीं बनाए यार. मुझे किसी ने तस्वीर भेजाई मैं सरबाला बनया यार. I swear I was about 10 and नोटों वाले यार हर जगह है मेरी. यहाँ तक मेरा मुंह यहाँ तक आए हुए नोटों वाले यार. Incredible. देख के ना मुझे ये वाली तस्वीर चेक करें. This is 92 World Cup. Okay. Perth. We went out. I think all the boys. It was a black theme. वो Swan River पे वो boat पे था कुछ. So we said चलो चलते हैं. तो देख कितने फिट थे हम तो. This guy took you guys out? हाँ? This guy took you guys out? This picture is on that particular day. I don't know इसने ट्वीट की थी ये पिक्चर. मुझे अब याद नहीं है. Who was this gentleman? ये ट्विटर की. It was how long was the World Cup? 92. मैंने कल दी गाली याद नहीं. तू कह रहे हैं ये कौन है? इतनी तस्वीर है ताड़े नाल. पिक्चर याद है. बेल्ट याद है because black के साथ brown पहना था. ऐसे आ रही है नजर. खचपच. लिपस्टिक भी. लिपस्टिक भी अच्छी लगाई. लिपस्टिक. देखना 24 साल के थे हम. 23 साल के खूब जवान होते थे. तो सबने ब्लैक पहना था. इंजी, मैं, मोइन, मुशी, आकिब और आई थिंक और कोई था. That is why we wearing black. That was the night before the game, wasn't it? Before the game, we're all wearing black. This wasn't the finals. This was Perth. Before the Australian game. Okay, but still familiar. Yeah, it's a World Cup 92. Yeah. Do we have एक वो पिक्चर आपने दिखाई थी वकार यूनुस की जवानी की. वो तस्वीर है. Don't go there. नहीं मैंने भेजी वो. नहीं भेजी. क्या करते हैं? नहीं. Why would I send that? What do you mean by that जवानी की? अभी भी जवान है मगर वो बहुत ज्यादा जवानी की तस्वीर थी. वो निकल गई है कहीं पे. गलती हो गई पाए ना. दिखानी चाहिए थी. ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਪਾਇਆ था जी भाई ने ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ थे तुम? खट्टे रंग दी कमीज. वो वाली तो नहीं है. कुल्फी फलूदा शर्ट. नहीं वो तो कुल्फी फलूदा. वो तो अभी तो blue. I think blue tracksuit. He was playing before we played for Pakistan. So I still kept that picture of him. जब वो तंग करता ना ये कहता मैं ला देगा ट्विटर पे. मैं हल्का जा उधर थोपियां लगना वैसे.
अभी भी जवान He had a है, mullet. अभी भी जवान है लेकिन अब बीच में स्प्लिट कर दिया है ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਗਿਓ ਕਿ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ हल्का नहीं नहीं मेरा आज बाड़े ना उन दिनों खाना भी पूरा नहीं मिलता था तो ये थोड़े अंदर के तो दे ही दियो भाई देखी सुपर फिट। तो चलिए आप भेजे ना ग्रुप के अंदर। मैंने सेव की हुई है। सेव किए ना ग्रुप में Main भेजे ना, में आज रखी आप हुई है आज ही हम भाई। दिखाई देते हैं। मुझे लग रहा है इन्होंने स्क्रीनशॉट रखी है स्क्रीन पे नहीं लगाते जो That would have been so weird if I had that. प्रोडक्शन को भेजे। हाँ, भेज रहा हूँ, दिस इज वेरी भेज रहा हूँ, इंपॉर्टेंट। आपकी कोई यादगार तस्वीर है जो आप छुपाना चाहते हो? मैं सारी छुपाना चाहता हूँ। All right, folks, you know, you're watching the Pavilion on A Sports in the Airways आप app. देख ले आप मेरी रैप Final खराब की कर बात रहे कर हैं एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर I दैट didn't- आपने वो येलो पे भी मेरा सारा मेरी रेपो खराब की है और अब आप ये भी करने जा रहे क्या हैं ये आप करने जा रिस्पॉन्सिबल हैं आई माइट टेक यू टू द कोर्ट You might take me to the court. Pakistani court? एनीवे मे बी ऑस्ट्रेलिया नहीं, लंडे पे ज़्यादा Then I'll be scared. मैं कहनी लंडे पे ज़्यादा वही मैं कह रहा हूं। Okay, well, the Final boys पे are getting बात it. Huh? फाइनल पे बात करनी है नहीं, फाइनल सुबह पे करनी है, वो सुबह कर कुछ लेंगे नहीं अभी करना एक क्या? स्टोरी You don't want to do anything in the morning. Time You for have a to work break. in the morning as well, Misbah. अच्छा आज टाइम तो फॉर अ ब्रेक आपने कहा था फाइनल से पहले फाइनल का शो है आज से फाइनल से पहले फाइनल है। आज हम सेमीफाइनल खेल रहे हैं अपने शो का। हमारा शो हम टेकिंग अ ब्रेक आप मिसबा के साथ 5 मिनट क्रिकेट की बात ना करें वो अजीब हो जाता मिसबा है। को खुजली होनी शुरू बिल्कुल हो जाती है। अजीब जिहा हो जाता है। बावला जिहा हो जाता है थोड़ा हल्का फुल्का। अगले को 20-25 फाइनलां ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ All right, guys, what? Break it up, boys. Break it up. बाकी बातें वहीं Break it up, boys. Break it up. Calm taking a down. break, right? We're taking Yeah, a we break. have to take a break. You're watching Break the this one, Pavilion maybe. on A Sports and the Airways app. Our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. We're going to be right back after this break, but we have a very special guest in the house because tomorrow it's England versus Pakistan, and we thought, which Englishman can we bring into the Pavilion? This is the first time we're breaking away from tradition and getting an Englishman into the Pavilion. Don't go away. Keep watching. See you on the other side of the break. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फ़खर आलम. आप देख रहे हैं Sports and the Airways app and our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. It's a big day tomorrow. It is England versus Pakistan. And as I told you just before going into the break that we have a special guest. So we thought it's England versus Pakistan. Let's get some Englishmen into the studio. This is the first time, by the way, we have broken away from tradition and we've gotten in a guest from the outside. It gives me great pleasure to introduce you all to His Excellency, the British High Commissioner to Pakistan, Mr. Christian Turner. Christian, welcome to the Pavilion. It is wonderful to be with you, Fakhr. Thank you very much. I'm very honoured to join on such a momentous weekend. Yeah, it is indeed. And you know what? Christian has great history with us, by the way. Waqar, Shoaib, Misbah, Wasim. I took him to Gwadar. We had a cricket match in there. Sure, and I put him in a broadcasting position. And he's the one who conducted the toss, the pitch report, the whole thing with it. You saw that, right, on TV? I was very nervous. Very nervous. Tossing that coin was a big moment, I tell you. and I think you're nervous now also about tomorrow isn't it You're right. I am very... I get nervous. So what's the gut feeling for tomorrow? Come on. What does the gut say, man? Well, you're the experts, gentlemen. But clearly, we must say England have a strong team. I don't think that is controversial. And having watched the 7 games we played in September, such a moment to bring English cricket back to Pakistan. Thank you very much. Years. That was a big deal. Those 7 games, remember, Butler, who else wasn't playing? Butler was Stokes on holiday, wasn't playing. Butler. Butler was there. He was there. He was not part of the team. He wasn't. So we are... I understand. We're looking good. We're going to just come back to that momentarily, Christian. But, you know, just before you came in, joined in, we were looking at some nostalgic moments from the 92 World Cup and, you know, visiting the past history that we've had. And surprisingly, Wasim, you know, he's such a keeper of history and records, you know, especially when it's on his other teammates and not on himself, right? And he's got this fantastic photograph that he has shared with the production of the legendary Waqar Younis on your screens now. Which year was this, Vicky? You look so pretty. You are bad. You're blaming everything on Wasim Bhai, huh?
You're blaming everyone. I'm not the one. You are the one who forced him to give this photo and put it up. Were there no barbers in 1992? It was a mullet. What's wrong with the picture? Let's एक दफा फिर लाइएगा वो तस्वीर जरा. Yeah, what's wrong with the picture? Let's What talk is about wrong that. with the picture? Yeah, What is so nothing Waqar wrong with the with the picture. picture. Waqar. Oh, yeah, what is right with the picture? Yeah, exactly. What is right with the picture? I like Just the fine. mullet. Yeah, kind of. I like the hairstyle. That's what I'm saying. Is that a mullet? That's not a mullet. So Christian Turner has a question, and a valid one. Were there no barbers back then? Was nice? I didn't have money by then. That's okay. Now you've just put us all in such a bad place, man. We were just trying to take a move and all. Okay, but you know that was a nice picture. Face expressions were telling us, yes, he had no money. Yeah. If we look at the picture again, I look poor. We don't want to look at it again. Very serious. Okay, that's enough. Very serious. All right, let me come to the business side of things. Those days, I was super fit. Which year was that? How old were you, Vicky? That was Then. back just before playing for Pakistan, just about 87, 88. That's Yeah. You're still super fit right now as well. Kristen, you've had a very big role in bringing English team into Pakistan. We've had quite a topsy-turvy situation in Pakistani cricket, and especially when the New Zealand team pulled out right at the last minute, and then the English board also announced that they're not sending their team in, and you know that the Pakistani fans were very, very upset and all that and everything. And I know that behind the scenes you played a very key role in trying to get that sorted out, and then eventually, what actually happened? Why did that happen to start with? And then how did you convince your government and your cricket board to actually send the boys over to Pakistan? So look, it's the answer to that is diplomacy. That's Yes. what I do. It's patient work, it's relationships, it's building trust. The history of what actually happened is well recorded. We didn't support it at the time. It was a decision by the board. I think many would reflect now that it's happened. I think one of the big positives is we've got 2 more matches this autumn when the tour finally happened. So I had to do my bit to try and bring people together, get relationships. I think huge kudos to Ramiz and all the boys at the PCB and to the guys at the ECB who actually worked back to make this autumn happen. And of course, after tomorrow's game, we've then got 3 test matches coming in December. Right. That is going to be, for me, I'm a bit of a traditionalist, as you expect, as an English gentleman. To see the test team back here will be absolutely enormous. So I would like to thank His Excellency about a very off-the-cuff question. Thank you very much for all the rubbish you have been cleaning. All the trails of Islamabad, yes. And then you went up north as well. Correct. And there must be, I really want to thank him. It's not his country, but he's helping it. He's going there regularly. And I think we should just learn from it. Yeah. Just learn. Stop throwing rubbish, guys. It's just, when I see past little parks, so, the Frey Hall, when I go past that during the morning when I come here to work, I see that place is full of plastic bags. People just throw the bins lying next there, but they don't bother to pick it up, put it in the bin. throw it in the bin. How can we evolve as a nation? Civic sense. Hamari dunya, hamari zimmedari hai. Absolutely. And we've seen with this climate change, huge meetings going on in Egypt at the minute. Yes. This is affecting the whole world. So we have to change our behavior. True. And at the COP, we have a very nice, the booth that Pakistan has. We have a nice little quote on it that says, "What happens in Pakistan will not stay in Pakistan." It's like the reverse of Las Vegas. Yes, it's like reverse of Vegas, right? Because this climate change is going to affect everything. So now, coming back to the previous question, Kristen, once again, how did you convince your government, as I asked you, about the security? Because there is this perception that was created, is continuously created, that, this is not a safe place to be. You travel Pakistan, you've been to Gwadar, you've been to northern areas of Pakistan and all that. Please tell the world that, it's not what they see. Look, part of my job is to help address those perceptions, as I say, and in the end, I'm not here to be a cheerleader for Pakistan. I'm here to advance British interests. Yeah, sure. But in this case, I saw a situation and I thought we had to work to change it. It's quantifiable how much the security in this country has improved. And by working very closely with the security experts at ECB, at PCB, in your system and in my system, we were able to build the trust and say, this is a tour that should happen. So when that first ball was bowled in Karachi in September, I was extremely happy. And look, I should be, I love cricket, clearly, I love the game. For me, it's a wonderful sporting weekend, but as an ambassador,
this is about much, much more than cricket. And we say Hum Ek Saath Hain, UK Pak Dosti. Yeah. So it represents so much more, and you've probably got viewers watching back home in England. Yeah. Those ties between us, you all know them really, they're really, really deep. And yes, it's sports diplomacy if you like, but it's about much, much more. Yes, please, Wasim. So how is the excitement in the embassy in Islamabad? Because they're half Pakistanis, half Brits there. And what about in England, the excitement of the finals tomorrow, Chris? Well, I think actually in the embassy and the High Commission, I think that it's going to be very interesting to see which way it ends up, because all of our Pakistani staff might be cheering the wrong way as far as I'm concerned. Back in England, there's been some lovely footage. There was a lovely bit of filming from Crystal Palace. You know, people are really. I saw that. You see that? They're watching the game. They're getting excited. And we've had some big successes for our English team sports. Our women's rugby team were in the final of the World Cup down in New Zealand. Yeah. So it's a good moment for our team sports. Let's hope that continues. Yeah. Tomorrow. Let me just give you a number here. England has been in the final 7 times, won twice in the World Cups. Pakistan been in the final 5 times, won twice. So what do you say now? What do you think about that? Ooh, You think it's your turn? Is that what you're saying? swinging late. You think it's your turn? Yes. Well, we'll I see. think he's covered from all the aspects because he's got both the colors. Yeah, I haven't. Can I turn and show the So kids? yes, actually, wait. you You'll can have to move the stand chair. up. You can You'll have to get up, Christian, and you'll have to walk where the Where is the camera? The Which pitch. one? This You'll have to camera? go to the pitch. Go to the pitch? Yes. You're not going to bowl any balls at me. No, You have to bowl to you. You have to walk to the pitch, and once we get you to the pitch, in the middle of the pitch, we'll do a pitch report. There's a little bit of grass tinge here. I'm just kidding. There's none whatsoever. All right, that's your camera. That's up my there. camera. So what is this T-shirt all about? Please tell us. This is England, or kyonke hum ek saath hain, UK Pak Dosti. Pakistan at the back. Ek saath. Nice, very nice. So the real point is, as a diplomat, you see, I'm covered each way. aren't I? Yes. Whoever wins, I'm the guy who's happy. You're the winner. I am the winner, and I'm sorry to say, the one person who'll be happy with the bad weather, Yeah. if there is Barish, Yeah. It's you. because we share the trophy. Yeah, that's true. And where is the one place in the world where a trophy can be kept so both England and Pakistan have it? My house. Oh, yes. In the diplomatic enclave in Islamabad. That makes perfect sense. So we can always go and enjoy the trophy. Thank you, Christy. Come back here with us. There. So Barish. I am and supporting the Barish. You It's a are terrible supporting the thing. Barish. So Although that's... I So worry. you're deep down a little bit worried. No, I am worried. And actually, in all seriousness, the 10 overs format, the shortened game, because I'm It's a not purist, fair. that feels for everybody. Yeah, true. Changes the dynamic. I mean, again, you're the experts, gentlemen, but that worries me a bit. Okay, time Maybe to share 2 days some... of T20s. Yeah. 2 days of T20s. 2 days If- of 20. It's like if they start the game on Sunday and rain comes and the match stops. Yeah. And Or they're it's going halfway. They're gonna to yeah. There they're won't be a gonna new start- game the yeah, next no. day. They start from the... They start from where they stop. same. But it happened was it Bangladesh against India, and the dynamic completely changed. Yeah. It does. It's a different day, different ball game altogether. Time to share some national secrets on national television. You need to spill the beans. How do we get rid of Alex Hales and Jos Butler? Come on. That's all you want. That is well beyond my pay grade, and you could lock me in with you all night, and I still wouldn't tell you if I did know. I thought we were going to get that out of you. But you've got to watch out also. I mean, I know your attack, your bowlers. I mean, I think I know you've been discussing Shaheen is one of the key factors Absolutely. in this match. But Wood, how fast is Wood? And Curran's at the death. You know, we've And got Wood our is own- fit. Yeah, Wood, he's He was bowling in the nets. yesterday. Karan is okay for us. Karan's okay You for think? us. Pace. The pace is the problem. Wood, everybody will be praying. Yeah, it's fast. I mean, I don't know how. He's rapid. Even you know, Baba and how you see the ball when it goes that quickly. The only issue is that because it's in Melbourne, and that really scares you because of that pace of his, and then of course Even in Pakistan, Yeah, with he was Shaheen's quick here as pace, well. and also then Haris balls were pretty quick also. So the Melbourne pitch, because it's very spicy, so it seems that they're unplayable, you know, So and it's it is jaldi. right. Yeah, very You jaldi. know, Waqar is playing mind games with you right now. You do understand, right? I'm trying. It's working.
it's so strange to see a pitch like that in T20 games in Melbourne, which used to be very flat. Right. You remember the Test match against England there? Yeah. I mean, no result after 4 days, 5 days. Even first inning of the Test match was not completed from both sides, and suddenly in T20 cricket, I mean, Melbourne pitch is not like that previously. I think it's early season there also. Remember that, and it's been raining a lot. Will the rain change it? Or not? Yeah. Rain change, moisture comes in with rain. And So also Wasim, a lot of grass. sorry, also. Wasim brought us some local information from Australia, and he says that all the Australians are supporting Pakistan. What do you think about that? I wonder why. So there are many jokes about this. You know, you ask a Scotsman or Australian, they're supporting anyone who is playing England. And it's not true. Ashes. Yeah, this is there's nothing to do with Ashes, right? This is absolutely fine. And there's all these empty tickets that those nice Indian gentlemen have been selling. Which are going. So $10. The crowd could absolutely, but we don't. Hales and Butler, they don't mind the crowd. Look at them in the semi-final. They just carried on. In fact, there was one moment in the game when Virat Kohli and Hardik Pandya turned towards the crowd and started, pointing to them that, come on, make some noise, lift us up, cheer us up, which is very good for the team, actually, getting the whole crowd in. And then Butler would just hit for a 6, and then everybody would go, calm down. What about the rest? The rest of the team? Yeah, you are confident about the rest of your batsmen? We don't want to give them a chance. We just want Butler and Hales to. I think law of averages. We know Stokes. Our middle. I think that is what is interesting about this team. Are you here tomorrow night? Waqar is playing some serious mind games here. This is really interesting. I think once is enough. I think once is enough as a guest, and then I will cede to the expert. Because I thought in the previous game against Sri Lanka, it was a different England team when they were just. I think I need to. Now you're getting attacked from your right side as well. I need to throw a ball back here. Can we just say a moment to thank the Netherlands? I know. Ooh, that's some serious reverse swing from Mr. Christian. Good one, Christian. Those nice Dutch people. Very good. Tomorrow's final, the team is going back to Netherlands, and we're going to thank them properly. I think you should. We take the trophy to them. With holding the trophy. They need chutney and the nicest things forever back in the Netherlands. Absolutely. What do you think about South Africa, though? Brave. Yeah. I mean, look, extraordinary statistic, and this takes me back to why cricket is bigger. Yeah. I think before the semis, there was a 4% chance Pakistan was. Exactly. That's true. That's so true. And isn't this Pakistan? You think it, and then just the country does great things. Yeah. So I'm an optimist. I'm excited for Pakistan, and to see that 4%, that's why we love the game, and that's why we love the country. Well, you know what, Christian? You've been a fantastic diplomat. You have represented your country really well here in your tenure, and you've been a great friend of Pakistan and the people of Pakistan and the game of cricket. And we really, really appreciate it. The last thing on the agenda before we close the show and sign off for the night, and we'll all leave here together, and then you can have a word with Waqar behind the scenes. Okay. I mean, you can ask your security to have a word with him, right? But I am still taking you to the court. Okay, so before we end the whole night tonight, the celebration is a very key part of the pavilion. We over here have a tradition of, when Pakistan does well, we celebrate and all that. We're just wondering how you intend on celebrating. So what we've done is we've lined up some music. Okay, and I've got Shoaib here. Shoaib is one of the most talented people that you've come across. Yeah, we never knew. We are going to. So Shoaib is going to teach you some he'll steps. teach you something but first we have to assess your performance before so we're going to play this music, okay? We're going to kind of help you out here as well, but we need to see how you're going to celebrate. And here's the thing, the tradition is we stay on our seats and dance. We don't get off the seat. This is seated dancing. This is seated dancing. This is a new Can I just be clear? This is taking me by surprise. Yes, of course. Dancing for your country is a whole new level of embarrassment. Look, it can't beat you taking off your shirt in Gawada waters, right? Shush. You can't beat that, not that. So here's this music. Please, zara volume upar kar.
Kristen, well done. Well done. Now, this is in case you win. All right? Now, this is if Pakistan wins. Save it for tomorrow. This is going to happen. So we want you to practice this with us so that you do this celebration tomorrow night. One second, before we start the music, please tell your security, don't get panic. Yeah. So they're not panicking at all. I'm just worrying It's not the security that is panicking. It's the Home Office in London that is like, what? I'm worrying about being sent to Antarctica or something. That's my next job. Here's It's a beautiful place. Very beautiful place. लगाई जी, अब ये हमारा देसी वाला तड़का है. This is Yes! Check out straight punching. Pakistan is winning. I'm unhappy now. So I'm unhappy. You gotta put your hands up. You gotta punch. I teach you this. Shoulders as well. Yes, shoulders as well. I got it with the shoulders. All right. Well done, guys. Well done. We've just taken people-to-people contact and diplomacy to a whole new level altogether. Thank you, Kristen, for being such a sport and, putting up with all of this. But, most of all, thank you for taking the time out and coming down to the pavilion. Absolute pleasure. Thank you. So, I hope everyone enjoys the game. Yeah, that's important. Cricket wins. That's the point. Yeah. Exactly. So, but we're not going to let you go. What's going to happen is we have a section called Ask the Pavilion, where we take questions off Twitter from people who are watching live, and we get a lot of these questions that come in every day. And we're going to start the Ask the Pavilion here with Kristen Turner, the British High Commissioner, staying with us in the pavilion. All right, and this is how it is going to go down. Wasim, do you have any questions? Though Wasim, you're still trending. Why are you trending so much? I don't know, man. You are really trending since yesterday. It's annoying now. You must have done something wrong. You must have done something. What did you do now? Please. I guess he's going to trend till the time this draft happens. So the reason I think he's trending because he put my photo up there. Then you should be trending. He did it. We did. So by the way, you wanted to make an announcement here regarding somebody. Who? What? When? Oh wow, your goldfish memory you have. Yeah, I do. This guy right here. Oh, yeah. Oh, yeah. Sebi, welcome to the Kings, buddy. Thank you, Wasim bhai. Thank you so much. Yeah. Excited? Very excited. Or I guess some homework is left because I've played for Karachi Kings. I guess when we started PSL, so I've played for Karachi Kings first 2 years. I guess something was left, and this year, inshallah, I'll make sure that I fulfill that. Thank you. Thank you, Sebi. All right, so straight away, I got a question for you, Mr. Kristen Turner. This is Dr. Safdar Ehsan. Dr. Safdar Ehsan says, I'd like to ask a question of your guest today, the British High Commissioner. Can he, on behalf of Pakistan, speak to other countries and other cricket boards to openly welcome to come tour Pakistan? So can you do that for us, please? I absolutely can, because the good news is they're all touring now. Yes, Who they have we are. had? I was Yeah, they are already. So Sri Lanka. he's already opened the door. Black Caps have come. The Australians have come. So we have broken the seal. The dam is burst. Question for Captain Misbah-ul Haq. We saw you standing at the Silly Point against Australia in the World Cup 2015 quarterfinals. What was going on there? Wasn't anyone wanted? And why didn't you have a helmet and go to Silly Point and you went there? When you grabbed the helmet from Sohaib, what was going on there? Do you remember that? They remember. Yeah, I remember that. Actually, that helmet wasn't just fitting into his head. That was the Whose head was small it? one. Sohaib Maqsood. Okay, so the helmet was small. So that we don't have that much time. So I thought, why to waste that time? Oh, so you just wore that helmet, and because the helmet fit you, you decided to stand on. That's great. I have a question from Altaf Hussain Khan. It's in Urdu, sorry. Question is, sir, मेरा सवाल है कि मेरे ख्याल में मेलबर्न की विकेट पर पाकिस्तान को 4 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर शादाब के साथ जाना चाहिए, और इफ्तिखार अहमद हमारे लिए 6th और बेहतरीन ऑप्शन हैं. क्या नवाज की जब हम एक्स्ट्रा बैट्समैन साथ जा सकते हैं? Nawaz is already playing better than some of our batsmen. Nawaz. Yeah, exactly. So why just sort of have an extra option of a bowling rather than bringing someone who hasn't played any cricket and suddenly you put him in a big finale? It's not going to be Why mess up with your winning combination anyway? Yes. And also, Wasim, we have been playing with 4 seamers. Anyway, yeah. Yeah, anyway, so there's no point bringing another one. Okay, Dr. Mohammad Saqlain Shah has tweeted Misbah-ul Haq.
I have some bad news for you. He's tweeted a photograph of you. Oh, lovely. Right. So this is the Iqbal Stadium, Faisalabad, in a test match between Pakistan and South Africa. Dr. Sajjad Sarwar Niazi Shaheed is with us. You were at Punjab Medical College hostels in those days, while a student of Science College, Faisalabad, and I have your picture here with a big circle on it, which I'm going to. That is already on big screen. That is already on the social media. You look, Waqar, you should be happy. Yeah, put it up there. People know that already. That picture is. Okay, play it down, clever, huh? Play it down. People already know that. We're still going to put it on the website. One question Go from ahead. Anis Farooqi. Yeah. Which country will declare national holiday in case they win? Yes. Pakistan or England? Yes. I think we should both declare national holidays. Especially In if any it rains. Win-win. If it rains and we're both winning and the trophy's coming to my house, then Yeah. it's a holiday for the rest of the week. Okay. Umar Zain says, please update us on the weather forecast for tomorrow. We are still looking at the weather. It's not sure, but... Well, I think it's a very easy, Umar. Go Google it. Go Yeah. to the web. It'll be easy. You get the weather. somehow they... somehow our credibility is a little more than Google. That's why they're asking. मैंने कहा ऐसी कि महक मौसमी आधे कुकड़े गए. There you go. Okay. Thank you, Wasim Akram, sir. It was not only 92 World Cup win, but it changed the whole country's sports dynamics and young generation, created a healthy environment and thinking for sports. So thank you so much. This is a thank you that has come in from Mohammed Sohail for you. I have, okay, Ask the Pavilion. माशाल्लाह इस ड्रेस में आप सारे नौजवान लग रहे हैं. इनका नाम है प्रिंस ऑफ साहिवाल. ये हमारी पीली शर्टों के बारे में बात कर रहे हैं, right? Okay, I thought they were talking about black. They're talking about the yellow shirts that you made us wear the other day, where we all looked like mango kulfis on that day, basically. It was 3 o'clock in the morning. And it was a 3:30 a.m. show, Kristen. We were here in the studio at 3:30 in the morning. That shows don't listen to him. So I'm a colorblind. So. All right. You know what? We're gonna wrap it up here, guys. Thank you very much. Thank you. He's colorblind. He's colorblind? We are not going to listen to him anymore. Yeah. You do realize that we're playing white ball cricket, right? Now I know why he wears rang-birange kapde. Yeah, he's colorblind. This is white, isn't it? All right. Thank you, Shoaib. Thank you, Waqar. Thank you, Wasim. Thank you. Thank you, Misbah. And most of all, thank you, Your Excellency. Thank you. British High Thank you very Commissioner, much. Mr. Kristen Turner. As I said earlier, thank you for being a friend of Pakistan and thank you for representing your country here and the crown here. And thank you so much for everything. And good luck for tomorrow to the English fans, to the Pakistani fans, and to everybody watching. Don't forget, tomorrow morning, 11 a.m., we're going to be right back here into the Pavilion on A Sports, 10 Sports, and the ARY Zap app with our coverage of the ICC Men's T20 World Cup final. Fasten your seatbelts. This is going to be fantastic. Good night.